We'll have an update on that story for you in just a bit, but also to remind our viewers that as we get nearer to the elections in Uttar Pradesh, India's most politically sensitive state, the political dogfight erupting over the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav's remark comparing Mohammad Ali Jinnah with Gandhi and Patel. UP Chief Minister Yogi Adityanath has lambasted Akhilesh for comparing Jinnah to India's Iron Man and the father of the nation. He said that the Samajwadi Party chief's Talibani mindset has been exposed and has demanded an apology from the former Chief Minister of UP. Akhilesh Yadav had compared Sardar Vallabhbhai Patel, Mahatma Gandhi and Nehru with Pakistan's founder Mohammad Ali Jinnah while addressing a public rally in Hardoi on Sunday. Akhilesh said Patel, Gandhi, Nehru and Jinnah studied in the same institute and were all freedom fighters. Akhilesh further added that all of them became barristers and fought for India's independence. Akhilesh Yadav also asserted it was Iron Man Sardar Vallabhbhai Patel who imposed a ban on the RSS. The SP chief's comments haven't gone down well with the BJP in poll-bound UP where it is in power. The Saffron Party has condemned Akhilesh's statement and said that the country considers Mohammad Ali Jinnah as a villain of the partition. सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पर पाबंदी लगाने का काम किया। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं। तो उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने न केवल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के देश के विभाजन के समय जो करोड़ों की संख्या में लोगों को आज बलिदान हुआ है उनके बलिदान का अनादर किया है, बल्कि तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया है। एक ही विद्यालय में पढ़ने के बाद एक ने देश का विभाजन करवाया और एक ने देश को जोड़ने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है। उन्हें तत्काल देश और प्रदेशवासियों से माफी मांगना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जिसने देश के टुकड़े किए हों विभाजनकारी जिन्ना को और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी से मिला दिया। उनकी विचारधारा से मिलाकर वो उन्होंने ये बता दिया कि अभी देश के अंदर ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो भारत के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है और इस सोच से पूरे देश के लोगों को बचना होगा और उन्हें पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि देश के महापुरुषों का अपमान किया है। जिन्ना जैसे ऐसे आदमी को मिलाकर जिसने देश का विभाजन किया हो। Abhishek Mishra live with me from Lucknow. Abhishek, obviously temperatures up in poll-bound UP, Jinnah infiltrating political Pradesh, and clearly appeasement is one of the many flavors of the season as we get closer to this election. Is this whole Jinnah, Patel, Nehru, Gandhi, talking point going to become a bigger political flashpoint as we get nearer? Well, absolutely, Shiv, and with the fact that how Akhilesh Yadav has given this statement in a rally in Hardoi and clearly comparing Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel and Nehru with Jinnah has come up as an opportunity for the BJP to not only target Akhilesh Yadav but at the same time also questioning the integrity of the Samajwadi Party. We have seen how Yogi Adityanath has clearly hit out at Akhilesh Yadav, referring it as a Talibani statement, Talibani ideology, and the other opposition leaders are also now emerging with their respective statesmen.
And as far as political analysts are concerned, they're also taking it in a way that what actually Akhilesh meant by this statement, whether it has come out in a flow or he actually intended to refer to a particular community or to give a reference point, is something which is still out of the question. Akhilesh Yadav has not reacted. Samajwadi Party, on the other hand, is saying that the BJP is trying to deviate the agendas. But BJP, not only the top leaders, but every leader, one and all, is saying that this clearly shows the intention of Akhilesh Yadav and how he's going to take these elections. So certainly this comment will not be taken very lightly anymore now. We can see its effect in the upcoming election campaign, where not only the BJP leaders, but also the other leaders would like to take advantage of it, and slamming Akhilesh Yadav on his own statement referring to Jinnah about the relevance and the kind of impact which could actually damage Samajwadi Party in the upcoming election. And you'll be seeing a big, very extensive interaction with Yogi Adityanath at 10 p.m. today from the Panchayat Aaj Tak in Ayodhya that happened yesterday. Unmissable interview that's coming up at 10 this evening. You want to watch that.